My dear students and friends, so welcome to our RSV Physics class. So this class is for problem set on nucleus. So basically for your class 12, NEET and JEE. Okay. So just read the problem 1, 2. Okay. This is the problem number 1. Which of the following pairs of nuclei are isotone? Means isotope, isobar and isotone. This means isotope means his see, this is isotope. This atomic number are same, but mass number is different. So this is isotope. Okay. Isobar, bar means a mass number is same. Where is the mass number same? This is called isobar. And what is isotone? Isotone, the neutron number is same. So if this is your total atomic mass and this is your atomic proton number, this is atomic number means proton number. So neutron number is 74 minus 34, and here neutron number is 71 minus 31. So this is equal to 40, this is equal to 40, this is neutron, this is neutron. So neutron number are same for this atomic nucleus. Okay. So selenium and gallium. So this is isotone. Isotone means neutron number are same. So now you clearly understand what is isotope, what is isobar, and what is isotone. Okay. So just erase the problem number 1. Next, for problem number 2, just read the problem number 2. Okay. Yes, see the problem number 2. Atomic weight of boron is 10.81. So atomic weight is fractional. Here atomic weight is somewhere, you see atomic weight. Whenever there is an isotope, so isotope means there is a atomic number are same but mass number is different. So when mass number is different, soon atomic weight will be fractional. Whose atomic nucleus that doesn't having any isotope, that in that case atomic weight will be the integer number. Okay. So this boron has 2 isotope. This is isotope. Atomic number are same but mass number are different. Okay. है ना, परमाणु क्रमांक सेम पर भर संख्या different है ना. Boron B510 and boron B511. Then the ratio of boron 510 and boron 511 in the nature would be, इनका ratio कितना होगा है ना, just calculate. So let's consider the ratio, the percentage of B510 is X% है ना, and B511 will be 100 minus X%. Okay. So B510 means X% means 10 जो है आपका 10 into X%. Okay. Plus 11 into 100 minus X by 100 है ना, equal to how much it is, 10.81. Okay. So this is 10x plus 1100 minus 11x. Okay, equal to 1081. Okay, now calculate here. So how much it is, minus x equal to minus उधर का जो है minus 19. So x equal to 19%. So B5 is 19% and B510 is 19% and B511 is 81%. So this ratio will be 19:81. Now clearly understood the problem. Okay. Now read the problem number 3. The nucleus of radius aluminum 27 is 3.6 Fermi. The approximate radius of copper is how much? So you know the radius will be of a nucleus. In nucleus this radius जो है, this is r है ना, this radius it will be radius will be r0
A to the power 1/3. This is typical relationship. A is the mass number. Okay, A is the mass number. Okay. So now radius, see, the radius of the aluminum is how much? 3.6 Fermi. Okay. So radius of aluminum. So R aluminum over R जो है आपका कॉपर है ना, दिस मच इक्वल टू R0 A to the power, A aluminum is 27 to the power 1/3 over R0 into जो है आपका हाँ अच्छा R0 कॉपर, कॉपर जो है आपका 64. ओके, सो रेडियस ऑफ जो है एल्यूमिनियम, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज हाउ मच? 3.6 फर्मी. ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे जो है 64 to the power 1/3. ओके, नाउ रेडियस ऑफ कॉपर, सो यू कैन कैलकुलेट 3.6 हियर. सो जो है आपका आर copper equal to how much it is? 3.6 into 64 to the power 1/3 over जो है आपका 27 to the power 1/3. So how much it is? 64 मतलब 4 over 3 है ना, 4 over 3 into, so this is 3.6 into 4 over 3, this 1.2, this is 4.8 Fermi. Okay, it's understood. So basic relationship is radius of any atom is related with R0 is a constant 1.2 Fermi. Okay, A to the power 1/3. This is the basic relationship. If you know the relationship, you can solve any types of problems in this kind. So problem number 1 is over. Now see the problem number 2. What it is telling? Just quickly read the problem number 2. Two nuclei have their mass number in the ratio 1:3. Okay, mass number 2 nuclei. So nuclei 1 and nuclei 2 is equal to 1/3. Okay, the ratio of their nuclear density will be. So nuclear density ratio means nuclear density mass जो है mass is proportional to A mass number. Okay, and density volume V is 4/3 pi r cube. Okay, 4/3 pi r cube. So 4/3 r cube, R means R0. So now rho density, rho 1 will be so if you, this is your proportional to some constant जो है आपका, so A मान लीजिए A over 4/3 pi R is R0, yeah, because R equal to R0 A to the power 1/3. So rho 1 is this one, and if your constant some mass number जो है ना आपका, so mass is proportional to A, so some constant C is C0. Okay, so C0 into जो है A है ना. So now rho 2 is how much? Rho 2 is how much? That C0 into this is A2 है ना, this is A1 and this is A2. Okay, now see, this is proportional to C0 by A2 and 4/3 pi R0, this is again A2. Okay, see here, now see rho is where this is the parameter R0 and A1 कट गया, A2 कट गया. So rho 0, rho 1 by rho 2, yeah, rho is, this is your constant, so this doesn't depend on A, मतलब atomic number. So whatever may be the atomic number है ना, so whatever may be the atomic number, see
density is constant. So whether it is helium atom or it is maybe helium जो है hydrogen atom or it may be uranium atom U92 to 38 किसी भी कुछ भी एटम हो जाए बट इसका न्यूक्लियर डेंसिटी डजंट डिपेंड ऑन दिस ए. कहीं ए का टर्म तो है ही नहीं, है ना, कट गया. तो C0/4/3 पाई आर क्यू, C0/4/3 पाई आर क्यू. सो ρ1 by ρ2 is to 1/1. So without any calculation you can comment on that ratio of their nuclear density will be 1:1. So nuclear density is constant. So basically nuclear density is constant. So हमने जितना टाइम बर्बाद किया इसको कैलकुलेट करने में उतना कैलकुलेट टाइम बर्बाद करने का भी आपको जरूरत नहीं. सो विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन कमेंट ऑन दैट डेंसिटी विल बी 1:1. सो बेसिक दिस इज द ट्रिक्स. ओके, अगर ये ट्रिक्स आपको पता है तो आपको इतना कैलकुलेशन करके देखने का भी जरूरत नहीं जितना हमने देखा था. सो ये ट्रिक्स यूज करके आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ प्रॉब्लम नंबर 5. So if you solve more numbers of problems, then you can easily solve any problem without any hesitation and quickly, because quickly and correctly answer is the important key of your ranking and etc. See, physics questions, so physics question may be tough and may be critical, but if you know the concept, then you can easily solve the problem. This is the beauty. So 4 is over. Now see, same again for problem number 5. Read the problem. The nucleus rupture into 2 nuclear parts. मान लीजिए फिशन हो गया, यार फिशन मतलब दोनों टुकड़े में डिवाइड हो गए. Which have their velocity ratio is 2.1. And what will be the ratio of the nuclear size? एक न्यूक्लियस था, वो रैप्चर होके 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं. उनका वेलोसिटी रेशियो दिस V1 and V2 इज V1 by V2 equal to 2E/1. Okay, so what will be the ratio of their nucleus size? Okay, so nucleus size कैसे ये करेंगे. So again मोमेंटम कंजर्वेशन दिस इक्वल टू जो है आप मान लीजिए दोनों तरफ जाएगा, है ना. M1 V1, this is M1 V1 and this is M2 V2. this is उल्टा, मान लीजिए दोनों उल्टा दिख गया है ना, M2 V2. सो M1 V1 इक्वल टू M2 V2 होना चाहिए, है ना. दोनों का जो है ये अदरवाइज क्या होगा आपका या दोनों का मोमेंटम जो है ये 0 होना चाहिए, है ना. सो अदर की पहले मोमेंटम 0 था, पहले बाद में भी मोमेंटम 0 होना चाहिए, तब आपका ये वैलिड होती है. सो M1 ओवर M2 इक्वल टू M1 ओवर M2 इक्वल टू V2 बाय V1, है ना. सो नाउ द साइज विल बी, सो मास प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, है ना. सम जो है C0 into A and it is proportional to mass number. M1 is proportional to mass number. So A1 एंड जो है ये आपका जो है C0 into A2 दिस इक्वल टू V1 by V2 is 1/2 एंड अगेन, है ना. अगेन यहाँ पे क्या होगा आपका साइज दिस इज A बिकॉज R इक्वल टू R0 A to the power 1/3, है ना. सो दिस विल बी R3, ये जो है आपका R1 ओवर R2 equal to 1/2. So ये equal to R over 1 R2 equal to 1 by 2 to the power 1/3, है ना. So this is the basic equation you have to remember. This R equal to R0 A to the power 1/3. Okay. Now read the problem number 6. The mass of lithium 37 nucleus is 0.02042 U atomic mass unit. That U is 1.66 into 10 to the power minus 27 kg, and this is equivalent to okay, so less than sum of mass of all nucleus.
the binding energy per nucleon is how much. So न्यूक्लियस ऑफ लिथियम न्यूक्लियस जो है इसका मास टोटल जो है आपका एक न्यूक्लियस के अंदर जो है ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है बहुत सारे रहते हैं ना, 3 3 6 1 7 है ना. सो 3 आपका प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन 4 इन सब का मास ऐड किए है ना, और ये सब मास ऐड करने के बाद जो है आपका न्यूक्लियस का अलग से वेट लिए. सो इनका जो है टोटल वेट न्यूक्लियन को वेट से न्यूक्लियस का जो है मास है ना, सो मास ऑफ प्रोटॉन है ना प्लस जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. सो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का टोटल वेट एंड इसका जो है इसका जो न्यूक्लियस का जो है आपका अलग से वेट है. दिस इज कॉल्ड डेल्टा एम एंड दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट है ना. यही तो होता है, मतलब टोटल न्यूक्लियन का वेट से न्यूक्लियस जो है आपका वेट थोड़ा सा कम होता है. सो दैट मच वेट इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी that is called binding energy equal to delta m into c square according to Einstein's E equal to mc square equation. So that much energy will be acting inside the nucleus and this is nuclear force है ना. So nuclear force is in terms defined in some potential and different types of potential. People are trying lots to explain this nuclear force. So this is a mysterious force है ना. So this force different models, different things are there. Okay, then later in higher classes you will say cell model, liquid drop model, everything you will be learning. So this is mass defect, total nucleon का weight minus वहाँ इसका जो weight actual nucleus का weight इतना होना चाहिए, but in actually it is seen mass of nucleus is somewhere less, delta m. And where is the mass gone? This mass has gone and it is converted into energy. That energy is binding nucleus. That is called, that force is called nuclear force. Okay. So mass defect already he is giving and one atomic unit जो है इतना unit जो है ये, so इतना unit you can convert into m into c square. So m u into c square equal to that u into 3.3 into 10 to the power 8 meter per second you can convert it and then it will coming 931.5 MeV. Okay, and now U is how much? So energy, so आपका जो binding energy will be कितना होगा 931.5 into 0.042, that will be coming 939.1 and total binding energy. And binding energy per nucleon, how much nucleon is there? 7. So binding energy per nucleon how much? 39.1 by over 7 equal to 5 point जो है 40 लगभग 5.6 के आसपास. ओके है ना. सो दिस इज MEV. This MEV per nucleon, it is important है ना. MEV per nucleon, binding energy per nucleon energy. Okay, now the problem number 6 is over. So again the problem, the relationship between mass of nucleon and binding energy. Okay, you see this mass of proton and mass of neutron minus mass of nucleus into c square equal to binding energy. Okay, this is binding energy total है ना. So mass of nucleus ये होगा आपका, so mass of, so ये this is the relationship, ये minus d over c square. So you can write mass of nucleus. So mass of nucleus you can write, oh this is Nu, nucleus है ना. Okay, so this Mn is this is nucleus है ना. Okay, so mass of nucleus will be how much? Mass of nucleus will be
m ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, माइनस जो है आपका बी ओवर सी स्क्वायर। आप अगर उधर लेके जाओगे ऐसा ही होगा ना, बी ओवर सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका वो पॉजिटिव हो जाएगा इधर, मास ऑफ न्यूक्लियस ए न्यू, है ना। सो दिस इज द रिलेशनशिप, ओके। So handy formula now, what you have to remember, one atomic mass equivalent to 9.315 MeV. So this is 1U equivalent energy, okay. Now न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियन, मतलब जो न्यूक्लियन का बीच में न्यूक्लियर फोर्स होता है। सो यू नाउ यू नो द ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू मास डिफेक्ट, and that energy is acting inside this nucleus only, not outside the nucleus, okay. This is short range force, this is called short range force, मतलब it is acting only inside nuclear force. सो हमने जैसे न्यूक्लियर फोर्स का डेफिनेशन बताया था ना, वहां पे आप ऐसा वो वाला लेक्चर पढ़ लीजिए ना। सो दैट फोर्स, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। सो प्रोटॉन प्रोटॉन का बीच में रिपल्सन होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का बीच में अट्रैक्शन होगा। सो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? सो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट this all force is same. So this equal to this equal to this, so all are same. So force between neutron neutron, force between proton proton, force between neutron proton is same. यहाँ पे जो है ये जो ये है ना न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, this is all are changing every time. It is some, when it is a neutron, after some time it will be getting proton, and then proton will be changing to the neutron, and this neutron proton conversion is going very quickly, है ना। सो यहाँ पे से न्यूट्रिनो और ये सब आप देखोगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कन्वर्सन, है ना। सो ये जो है आपका इस कन्वर्सन को इतना सा एक दूसरे से वो पहचान ही नहीं पाते, एक दूसरे से रिपल्सन करने का टाइम वो पहचान ही नहीं पाते हैं वो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है। सो ये पिक्युलियर फोर्स, यहाँ आप जितना ऊंचा क्लास में पढ़ेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। सो फॉर योर क्लास 12 इतना ही जो है ना, in simple language we just see that, है ना। So this problem is 9 is from radioactive decay. The half life of a radioactive substance is 20 minutes. In how much time the activity of the substance dropped to 1/60? Okay, see, in radioactivity this equation, the disintegration per second is proportional to इनिशियल नंबर, ओके। सो इन दैट जो नंबर जो है इतना n नंबर्स ऑफ रेडिएटिव सब्सटेंसेस एट टाइम t, सो दिस इज लैम्डा dn dt इक्वल टू जो है ये माइनस जो है ना, ये माइनस डीके है ना, इसलिए माइनस लैम्डा n। सो dn ओवर n इक्वल टू माइनस लैम्डा t, एंड इंटीग्रेशन विल बी जो है आपका n टू n0 to n, है ना, एंड दिस इज इंटीग्रेशन विल बी दिस जो है आपका dt, है ना, इंटीग्रेशन है 0 to t। सो ln जो है आपका ln जो है n ओवर n0 इक्वल टू e टू द जो है आपका माइनस लैम्डा t, एंड n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। This is the basic radioactive equation that you solve in equation. So n, let's carefully consider n0 is the number of radioactive substance, and after some time it will reduce to 1 by half. So that is called, so n equal to n0. So at some time, so n over n0 will be half, है ना, इक्वल टू e टू द पावर जो है आपका माइनस लैम्डा टी, ओके। नाउ e टू द पावर जो है लैम्डा टी इक्वल टू 2, ये उल्टा कर दोगे इधर इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा उधर, है ना। सो ln, सो लैम्डा टी हाफ, ये टी हाफ जो हाफ कर दिया ना, टी हाफ इक्वल टू
ln2, so t half equal to 0.693, this is ln2 over lambda, है ना, t half, this is t half. So this relationship you have to remember. So t half and radioactive decay constant is, so two equation you have to remember. One is n0 e to the power minus lambda t, and t half is the, that is जो है half life of this substance. So half of the element will be decayed into another element. डिके किसी भी टाइम पे एक सैंपल में इतना बहुत सारे, मान लीजिए आपका बहुत सारे ये था, तो वहां से हाफ हो गया, सो हाफ नंबर, सो नाउ मान लीजिए यहाँ पे 100 था, आप किसी भी 100 मान लीजिए यूरेनियम 235 था, सो आप ये डीके करके आपका मान लीजिए फिशन ये करके कुछ आपका रेडियोएक्टिविटी ये डीके करके आपका अभी 50 हो गया. सो नाउ व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एटम? Total number of atom will be again is 100, but 50 will be uranium 238 and it will be another, it will be converting to another substance, है ना. तो ये फिशन में तो स्टेबल ये आइसोटोप फिशन होता है, यूरेनियम 238 नहीं, दूसरा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसका आपका ऑटोमेटिकली आपका रेडियोएक्टिव एलिमेंट से कन्वर्ट, सो कन्वर्ट होके दूसरा एलिमेंट होके ये बैठा. सो 50 विल बी अनदर एलिमेंट एंड 50 विल बी ओरिजिनल मदर जो है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. ओके, सो दिस इज द फंडा. एंड रेडियो टाइम कांस्टेंट, दिस इज हाफ लाइफ, है ना, दिस इज हाफ लाइफ इज दैट मच लाइफ हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विल बी डिकेड इनटू अनदर सब्सटेंस, है ना, इन दैट टाइम. सो हाउ मच नाउ read the problem number 1, 9 जो है ना, half of the half life of the radioactive substance is 20 minutes, and how much time the activity of the substance dropped to 1/60. So activity जो है n by n0 will be 1/60. So how much half life हो रहा है यहाँ पे? So this is 2 to the power n. So n equal to how much? कितना हाफ लाइफ हो रहा है जो है आपका n का n0 16th टाइम हो गया, तो कितना हाफ लाइफ हो रहा है यहाँ पे? 4 हाफ लाइफ, है ना. 1 हाफ लाइफ इज 20 मिनट, देन 4 हाफ लाइफ विल बी 80 मिनट. सो 80 मिनट बाद आपका जो है 1/16 ऑफ द ओरिजिनल मदर एलिमेंट विल बी देयर एंड अनदर विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर स्पीसीज, बट इट विल टोटल नंबर ऑफ एटम विल बी सेम. ओके, ऐसा डीके होके गायब हो गया ऐसा नहीं होता है, दूसरा एलिमेंट रहेगा, बट मदर एलिमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर एलिमेंट. ओके, सी द अनदर प्रॉब्लम इज सेम प्रॉब्लम बट टिपिकली डिफरेंट. द half life of radioactive substance is 30 minutes. The time taken between 40% decay and 80% decay. So 40% decay is 0.4%. So है. So at any time, let's see, this is n time and n minus n into 40 by 100. So how much it is present? जो है ये कितना हो रहा है यहाँ पे 0.6 n एंड 40% डीके होने के बाद ये रहता है. अब वो क्या बताया उसने? टाइम टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 80%. 40% डीके के बाद प्रेजेंट एटम प्रेजेंट एट 40% डीके, और यहाँ पे जो है 85% डीके का टाइम कितना रहेगा? n माइनस जो है n इंटू 85 by 100. सो दिस विल बी कितना होगा आपका? जो है आपका 100 है ना, 0.6 एंड दिस इज विल बी 0.85. सो 0.15 n है ना. सो हाउ मच? सो दिस इज सो नाउ n, दिस इज मान लीजिए यहाँ पे n जो 40% डीके बाई n 85% डीके में कितना हो रहा है प्रेजेंट न्यूक्लियस का? 0.6 by n over 0.15 n. So this is 4, है ना. So
सो 4, सो मतलब 1/4 टाइम डीके होने के बाद ये जो है, सो n 85% डीके ओवर n 40% डीके इज 1/4 टाइम। सो 1/4 टाइम ये डीके हुआ, सो कितना हाफ लाइफ होगा इसका, 1/2 n, दिस इज 2 हाफ लाइफ। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक, 60 minutes। okay, the same time problem but in different years। okay है ना। read problem number 11। the rate of radioactive disintegration at any instant for a radioactive sample of half life 2.2 into 10 to the power 9 second is 10 to the power 10 minus second है ना। so number of radioactive atom at that instance। so कितना, so basically that equation you know, rate of disintegration तो ये जो है आपका इक्वल टू माइनस लैम्डा एन है ना। सो ये आपको, सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आपको पता है कितना है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एट टाइम 10 to the power 10 इक्वल टू जो है माइनस जो है लैम्डा इनटू एन। एन इज द नंबर ऑफ एटम है ना, जो है आपका नंबर ऑफ एटम, ये एन 4 है, उस टाइम पे एन इज हाउ मच व्हाट कितना है। सो यू हैव टू नो द लैम्डा। So lambda will be 0.693 over t half कितना है, 2.2 into 10 to the power 9 seconds। so from where you can calculate that lambda, and if you know the lambda then you calculate n। so this is the fundamental equation। okay, so से ये यहाँ से lambda आपने t half से निकाल लिया, और आपका जो है lambda से आपको नंबर ऑफ एट एनी इंस्टेंट नंबर ऑफ जो है आपका एटम जो है आपका ये कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज वेरी टिपिकल एंड ये क्वेश्चंस। नाउ सी द प्रॉब्लम नंबर 12 एंड दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस क्लास, एंड वन काइंड ऑफ सच प्रॉब्लम विल बी देयर फॉर एवरी ईयर्स एग्जाम। सो इफ यू नो द स्पॉन्टेनियस जो है डीके ट्रांजिशन एंड एवरीथिंग, सो इसमें क्या होता है, सो आप just one problem if you solve this then any problem you can solve। so let's consider radioactive atom JE। यहां से आपका जो है मान लीजिए आपका बीटा पार्टिकल डिके हुआ, सो बीटा इज 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से डिके हुआ, सो आपको क्या होगा आपका ऑलरेडी बीटा इज -1 जो है 0। सो -1 0 होगा आपका, तो आपका एटॉमिक नंबर में आपका क्या है, एक बढ़ जाएगा। ये जेड में, जेड से एक नेगेटिव होगा, तो अब मान लीजिए दिस इज वाई, यहाँ पे वाई में आपका जेड +1 एंड आपका ए इज यही रहेगा, ए है ना। सेम एक्स जेड ए से आपका एक ये जो है, ये तो ये पार्टिकल ये पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकल गया। सो क्या होगा आपका पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिट्रॉन, से पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जो है आपका, सो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जो है इसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं ना। सो बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, बट इलेक्ट्रॉन एंड बीटा पार्टिकल आर लगभग सेम है ना। सो आपका अब यहां से ये निकलेगा, तो ये क्या है आपका +1 0। सो क्या होगा आपका दिस वाई जेड -1 एंड ए विल बी ए, यहां से 0 ही है ना ये। अब यहां से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, मान लीजिए एक्स जेड ए, यहां से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। कौन सा अल्फा पार्टिकल, क्या है अल्फा H24 और हीलियम न्यूक्लियस का है ना He24, एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो क्या होगा मान लीजिए ये वाई, सो जेड -2 होगा एंड ए -4 होगा, ठीक है ये। सो जस्ट यहां से जेड से 2 माइनस, ए से -4, तो ये जो स्पीसीज होगा इसमें, सो दिस इज एटॉमिक नंबर -4 एंड एटॉमिक नंबर जेड -2 एंड मास नंबर विल बी ए -4। नाउ दिस इज द रूल्स, एंड जो है आपका रूल्स नहीं, दिस इज द कॉमन सेंस। ओके, सो दिस इज नॉट अ वेरी बिग रूल्स। सो नाउ इन दिस ट्रांजिशन जो है, मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव एटम, इट इज स्पॉन्टेनियसली
decaying into different species. So what will be the transition here? Z will be, यार मान लीजिए A का बारे में जिक्र नहीं किया, क्या होगा, बट आप यहाँ से Z से भी पता लगा सकते हो. सो Z नेगेटिव, एक नेगेटिव हो मतलब पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, प्लस बीटा पार्टिकल है ना, ये +1 0 है ना. सो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल यहाँ से निकला. अब यहाँ से फिर 2 माइनस हुआ. 2 कैसे माइनस हुआ? ऑब्वियसली यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया क्योंकि Ag24, तब ये हुआ. अब Z-3 से एक प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, एक प्लस हुआ. प्लस हुआ कब होता है? जब आपका नेगेटिव बीटा -1 0 निकलता है, तब आपका प्लस होता है ना, जैसे आपने देखा है. सो एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, नेगेटिव बीटा पार्टिकल, इसका ट्रांजिशन हुआ, तब ये मतलब इसका जो है ये स्पॉन्टेनियस आपका डिके हुआ. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द स्पॉन्टेनियस डिके एंड समथिंग. यहाँ पे कौन से जिसमें अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल, नेगेटिव बीटा एंड पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलता है. सो you can solve any types of problem if you got in your exam. Okay, now ठीक है, पढ़ते रहिए. थैंक यू.